नेक्स्ट देखो अभी, सपोज फोर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स a1 a2 a3 a4 आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. लेट b1 इक्वल टू a1 b2 इक्वल टू b1 plus a2 b3 equal to b2 plus a3 and b4 equal to a3 plus a4. Which of the following statement is a true? Statement 1. The number b1 b2 b3 b4 are neither in arithmetic progression nor in a geometric progression. Statement 2. The numbers b1 b2 b3 b4 are in a harmonic progression. Okay. Which of the following statement is a true? ये पूछा है यहाँ पे. अभी इसमें देखो ये जो है ना, एक बार फिर से रीड कर लेना एग्जाम्पल. ठीक है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट को क्या दिया. ओके. देखो अभी यहाँ पे गिवन क्या दिया, लेट द फोर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बी a1 a2 a3 a4. लेट a1 इक्वल टू a, द कॉमन रेशियो बी r. Since the number are distinct, are not equal to 1. Since the numbers are positive, a greater than 0, r greater than 0. If r less than 0, then a2 equal to ar would be negative. Contradicting positivity, if r equal to 0, then a2 equal to 0, contradicting positivity. We have a1 equal to 0, a2 equal to ar, a3 equal to ar square, a4 equal to ar cube. Let's define the sequence bk. तो b1 equal to a1, that is equal to a, है ना. b1 इक्वल टू क्या दिया a, ये पूरा गिवन दिया इसमें, है ना. b2 इक्वल टू क्या दिया वहाँ पे, b1 प्लस a2, दैट इज इक्वल टू a प्लस ar, मतलब a कॉमन निकला तो 1 प्लस r. b3 इक्वल टू b2 प्लस a3, ये दिया गिवन, है ना. ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिया है और ये गिवन दिया है, मतलब a 1 प्लस आर स्क्वायर. b4 इक्वल टू b3 प्लस a4, a 1 प्लस आर स्क्वायर, तो a 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब. Analysis of statement 1. The numbers b1, b2, b3, b4 are neither in arithmetic progression nor in a geometric progression. So part 1, check if bk are in arithmetic progression b1 b2 b3 b4 to be in ap. The common difference must be equal. b2 minus b1 equal to b3 minus b2, that b4 minus b3, मतलब ये डिफरेंस हो गया. ap है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, दैट इज द डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी बोलते हैं ना, उस टाइप का हो गया. सो b2 minus b1 equal to a 1 plus r minus a, that is equal to a, and b3 minus b2 equal to a 1 plus r square minus a 1 plus r, that is equal to ar square. b4 minus a3, that is equal to a 1 plus r square plus r cube 1 minus a 1 plus r square, that is equal to ar cube. For them to be in AP, we must have AR equal to AR square equal to AR cube. Since A greater than 0, we can divide by A. R equal to R square equal to R cube. From R equal to R square, we have R, 1 minus R equal to 0. Since R greater than 0, we must have R equal to 0. However, the problem states that A1, A2, A3, A4 are distinct numbers. So if R equal to 1 liya, then A1 equal to A2 equal to A3 equal to A4 equal to A, which means they are not distinct. Therefore, R is not equal to 1. So B1, B2, B3, B4 are not in AP. Part 2. Check if BK are in geometric progression. So B1 to B4 to be in GP. The common ratios must be क्या हो गया, B2 by B1, B3 by B2, B4 by B3. So B2 by B1, B2 और B1 यहाँ से पुट करो, कहाँ से, ये B2 और B1 पुट कर दो. So B2 by B1 क्या हो गया, 1 plus r square by 1 plus r. B4 by B3 क्या हो गया, 1 plus r square plus r cube upon 1 plus r square. For them to be in GP, we must have 1 plus r equal to 1 plus r square upon 1 plus r. So 1 plus r whole square equal to 1 plus r square, that is 2r by r, implies r equal to 0. However, r must be positive, so AK are positive numbers, A1 not equal to 0. If r equal to 0, A2 equal to 0, which is not positive. Therefore, r not equal to 0, so B1, B2, B3, B4 are not in GP. From part 1 and part 2, statement 1 is a true. क्लियर है ना. पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से स्टेटमेंट 1 क्या बोला है यहाँ पे, स्टेटमेंट 1 में बोला है द नंबर्स b1 b2 b3 b4 आर नाइदर इन एपी नॉर इन जीपी. देखो मतलब ये जो है ना, नॉट इन जीपी एंड नॉट इन एपी, है ना. स्टेटमेंट 1 इन ट्रू. द एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट 2 भी कर लेंगे. द नंबर्स b1 b2 b3 b4 आर हार्मोनिक प्रोग्रेशन. देखो ये पूरे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मतलब देयर रेसिप्रोकल आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो सी के इक्वल टू 1 अपॉन बी के, सी वन इक्वल टू 1 अपॉन ए, सी टू इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस a into 1 plus r, c3 equal to 1 upon a 1 plus r square, and c4 equal to 1 upon a 1 plus r square upon plus r cube, है ना, इस टाइप के. देखो c1 c2 c3, ऐसे ये देखो c1 c2 c3 c4, सही है.
अभी देखो यहाँ पे सी के इक्वल टू सी के टू बी इन ए पी वी मस्ट हैव सी टू माइनस सी वन इक्वल टू सी थ्री माइनस सी टू. So 1 upon a 1 plus r minus 1 upon a equal to 1 upon a 1 plus r square minus 1 upon a 1 plus r. Multiplying the entire equation by a. 1 upon 1 plus r minus 1 equal to 1 upon 1 plus r square minus 1 upon 1 plus r. है ना, क्योंकि ये ना सी टू माइनस सी वन इक्वल टू सी थ्री माइनस सी टू. तो इस हिसाब से कंबाइन द टर्म्स ऑन ईच साइड. तो इसको सिंप्लीफाई किया. देखो सिंप्लीफाई, देखो ऐसे ये इसको सिंप्लीफाई किया लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे राइट हैंड साइड इसको सिंप्लीफाई. देन लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया, राइट हैंड साइड ये आ गया. अभी आर क्या है, ग्रेटर देन जीरो एंड आर नॉट इक्वल टू वन. वन प्लस आर नॉट इक्वल टू जीरो, वी कैन कैंसल माइनस आर अपॉन वन प्लस आर फ्रॉम बोथ साइड. आर नॉट इक्वल टू जीरो, तो वन इक्वल टू आर अपॉन वन प्लस आर स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई वन प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू आर, मतलब वन प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो. एंड मतलब क्या हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन. ये ऐसे मतलब दिस इक्वेशन क्या हो गया, ये this equation has no real value solution for r since r must be a positive real number, r square must be positive. So b1 b2 b3 br are not in hp. The statement 2 is a false. तो मतलब statement 1 is a true, statement 2 is a false. Clear? Next.